So, well, dear students, let's come to the next topic of this tense. I mean, the use of he, she, it, and singular noun or name in present indefinite tense. How to use sentence structure is there. When we have he, she, it, or singular name as a subject, we use सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब. जैसे हम आम जुबान में इनफॉर्मली वर्ब प्लस एस और ई एस कहते हैं, एक्चुअली दैट इज कॉल्ड सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब. प्रेजेंट टेंस सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो प्रेजेंट टेंस सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब, या आम जुबान में जैसे हम कहते हैं कि वर्ब प्लस एस और ई एस वो लगाते हैं, देन ऑब्जेक्ट और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. और रिमेंबर कि जब हम आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ डू का इस्तेमाल करते हैं बतौर हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पर हम ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ डस का इस्तेमाल करते हैं बतौर हेल्पिंग वर्ब. बट डू रिमेंबर कि जब डस का इस्तेमाल होता है तो वर्ब से एस और ईएस ड्रॉप हो जाते हैं, या हम फिर जब डस का इस्तेमाल करते हैं तो वर्ब की फिर फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म लगाई जाती है. जब हम खुद इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जब हम कर रहे थे, तो टीचर्स अक्सर कहते थे कि जब डज होता है तो एस या एस खत्म हो जाता है, भाग जाते हैं. तो दैट इज अ सिंपल फॉर्मूला. दैट्स अ टाइप ऑफ निमेनिक तो हम नहीं कह सकते, लेकिन अ टाइप ऑफ निमेनिक कि हम डज का लफ्ज जब सामने आता है तो ऐसे फायर हम मुराद लेते हैं, बिकॉज दैट इज अ पुश्तू वर्ड डज विच मीन्स फायर, गोली चलाना. जब गोली की आवाज आती है तो एस या एस भाग जाते हैं वर्ब से. तो ये फॉर्मूला स्टूडेंट्स जहन में याद रखिएगा. तो जब डज का यूज होता है नेगेटिव में या इंट्रोगेटिव में तो वर्ब के साथ एस या एस नहीं लगाते. नोट वन थिंग, the extra s or es is dropped when does is used. And note the verbs that end in o, x, ss, sh, ch, z or such words, they take es and rest of the verbs take only s. So ये बात जहन में रखनी चाहिए कि आमतौर पर ये जो मशहूर एंडिंग है एस एच है या एस है, सी एच है, एक्स है, तो इस पर जो अल्फाज जो वर्ब्स ख़त्म होते हैं तो उनके साथ हम ई एस का इस्तेमाल करते हैं. रेस्ट ऑफ द वर्ब जितने भी हैं उनके साथ हम सिर्फ और सिर्फ एस लगाते हैं. बट वन थिंग मोर टू बी रिमेंबर्ड कि वाई हो तो इफ़ द वाई इज प्रीसीडेड बाय अ वावल तो सिर्फ एस लगाते हैं, और अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो तो फिर वाई को ड्रॉप करके आई ई एस लगाते हैं. आगे पढ़ेंगे, एग्जाम्पल्स में हैं. वेल, सेंटेंस वन एग्जाम्पल आप देखें. शी रीड्स अ बुक. वो एक किताब पढ़ती है. दिस इज अ रिपीटेड एक्शन. शी रीड्स अ बुक. अगर हम कहते हैं कि शी इज रीडिंग अ बुक, मीन्स द एक्शन इज कंटिन्यूअस इन प्रोग्रेस, मतलब अब वो एक किताब पढ़ रही है. लेकिन यहां पर शी रीड्स अ बुक मीन्स वो एक किताब पढ़ती है. इसका नेगेटिव सेंटेंस होगा शी डज नॉट रीड अ बुक. इंट्रोगेटिव, डज शी रीड अ बुक, क्या वो एक किताब पढ़ती है. डज शी नॉट रीड अ बुक, क्या वो एक किताब नहीं पढ़ती है. रिमेंबर कि यहां भी वही बात है कि हम डिक्लेरेटिव क्वेश्चन पूछ सकते हैं. शी रीड्स अ बुक or he plays cricket, like this. Well, next example, she washes clothes. देखिए यहाँ ई एस लगा हुआ है. she washes, एक syllable भी ज्यादा हो गया क्योंकि verbs जो x, sh और ch पर एंड हो, खत्म हो, तो जब इनके साथ हम ई एस का इजाफा करते हैं तो एक syllable भी बढ़ता है, तो washes और z साउंड आता है. वेल, शी डज नॉट वॉश क्लॉथ्स. डज शी वॉश क्लॉथ्स, डज शी नॉट वॉश क्लॉथ्स. वेल, आप इन एग्जाम्पल को आप देखें. प्ले और ट्राई दोनों वर्ब्स वाई पर ख़त्म हैं, लेकिन शी प्लेज हॉकी, वाई के साथ हमने एस को ऐड किया हुआ है. और एंड शी ट्राइज हार्ड, वो खूब कोशिश करती है या खूब मेहनत करती है. तो आप ट्राइज में देखें
यहाँ पर y की जगह IES लगा हुआ है, तो इट मीन्स कि जब y से पहले कॉन्सोनेंट लेटर हो, अल्फाबेट टाइप सेट ऑफ अल्फाबेट में से कोई कॉन्सोनेंट हो, तो फिर हम y को ड्रॉप करते हैं और IES लगाते हैं. द रूल इज दैट, और जब y इज प्रिसीडेड बाय अ वॉवल तो फिर सिर्फ s का इस्तेमाल करते हैं और द y इज नॉट ड्रॉप्ड. ऑन द अदर हैंड, जब इसका इंट्रोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस हम बनाते हैं तो वही रूल अप्लाई होगा. शी प्लेज क्रिकेट, शी डज नॉट प्ले क्रिकेट. शी ट्राइज हार्ड, शी डज नॉट ट्राई हार्ड. Well, so that is how we do present indefinite tense. इसमें दो तीन क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ही शी पर या इट या नेम के बारे में. फॉर एग्जाम्पल, डज ही प्ले क्रिकेट? द आंसर इज yes, he plays cricket. Does he go to school every day? Yes, he goes to school every day. Does she write a letter? Yes, she writes a letter. Or if in negative, no, she does not write a letter. Well, कुछ question words का use करते हैं at the end of this exercise of this tense. For example, we have, what do you think about playing cricket? अब कंफ्यूज ना हो गया, यहाँ पर प्लेइंग क्रिकेट आया, दैट इज अ जेरेंड, और that is like that functions like a noun phrase or like a noun clause. So what do you think about playing cricket? हमारा काम think के साथ है. I think it's a good idea, let's play. What do you need? I need to have a cup of tea. I need money. Everybody needs. Well, what do you like the most? The most that I like are good meals. Or if in relatives, my parents, my kids, my wife, like this. Where do you live? Oh man, I live on the land of Allah. Or I live in Peshawar. Well, who teaches you English? Mr. Asif teaches me English from behind the camera. Well, whom do you meet every day? I meet Mr. Asif every day because he makes videos. Well, he makes my videos. Well, how do you feel? I feel quite well. Nothing wrong. Everything is okay. When do you get up? By when do you get up, we mean at what time do you get up? So I get up early in the morning. What time? At 5 o'clock, 6 o'clock, like this. Well, why do you play cricket? But I don't play cricket. If yes, yeah, I play cricket for cricket, for it's a good exercise, and I'm fond of playing cricket. I'm a fast bowler. What do you mean by the word humbug? I don't know. It's a difficult word. Let me ask someone. Oh, I think it means nonsense. Yeah, of course, it means nonsense. Well, when do you play cricket? By when do you play cricket, we mean what time do you play cricket? I play cricket in the evening time or sometimes in the morning on Sundays. What do you want to become? Remember, students, if you are new and you are not very familiar with English, तो want to usually इस सेंटेंस को अमेरिकन या इवन ब्रिटिशर्स आल्सो इस तरह प्रोनाउंस करते, what you wanna become, what you wanna become. तो what you want to become. Actually, the full sentence is what do you want to become. So they usually pronounce the sentence like what you wanna become. तो ये मसला होता है, समटाइम्स स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, ये सिर्फ चंद ही सेंटेंसेस है जो इस तरह प्रोनाउंस होते हैं. हर सेंटेंस ऐसा नहीं होता. तो इन्हीं सेंटेंसेस को लेकर अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, थोड़ा सा आप वो एक्सेंट इख्तियार करें, वो टोन इख्तियार करें, सो नथिंग इज डिफिकल्ट, यू कैन डू दैट. वेल, व्हाट यू वांट टू बिकम? I want to become a doctor, or
I don't know what I'll become, but I think I should become an engineer. Well, why do you learn English? Oh, that's a good question. I learned English because I like that very much. I like it. And I want to go to England for higher education. So, for that reason, I want to learn English from today. And I want to be fluent in my English because all subjects are in English: mathematics, physics, chemistry, bio. Each and every subject is in English. So, I need to learn English. That's why I learn English. Well, who speaks English to you? Mr. Asif speaks English to me. From behind the camera, he's recording the video and sometimes he speaks English to me. Oh, there is a good question. How do you do? How do you do? How do you do? Like this, we can ask the question. Usually this question is the answer is usually sometimes, not usually, but sometimes the answer is given like, how do you do? I'm fine. It's informal to say I'm fine. The formal answer to this is, how do you do? Well, you'll be confused. Of course, this is so. If you ask this question, how do you do? The answer is also, how do you do? Even in modern English, this pattern is followed, and most of the learned people answer to this question. For example, if I'm asking Mr. Asif, how do you do, Mr. Asif? He says, how do you do, Rahi? Quite well. So, like that, we go together with this. How do you do means, aap kaise hain? How are you? Right? Well, the next is, which hand do you write with? I write with my right hand. What game do you like? Look at here. What game do you like? What color do you like? What time do you go? Instead of which, we use in modern English, we usually replace which by what in most of cases. I like cricket. Where do you play cricket? I play cricket in the playground. With whom do you play cricket? Definitely I play cricket with my teammates. So that's the end of present indefinite tense. होप कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए. विश यू ऑल द बेस्ट. और चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना मत भूलिएगा. ऑल द बेस्ट. अल्लाह आपको कामयाब करे.